Welcome to Akaku English News. Today we will bring you latest news. Thanks for watching Akaku English. Let's show news. In Khandwa district of MP, due to continuous unseasonal rains and windstorm for the last few days, the commercial crops standing in the field of farmers have started to suffer heavy losses. Especially the crop of onion, watermelon and moong were damaged. Onion was ready after cooking in the farmer's field. Due to this rain, it got fungus, due to which neither it will be produced nor this onion can be preserved. Farmer stores onion of this season so that they can make some profit due to increase in the prices in the future of onion, but the unseasonal rains have ruined the crops of the farmer and their dreams also. Same in the condition of watermelon at this time. Watermelon was being sold for 2 to 3 rupees per kilogram in the market, but this rain has ruined the watermelon crop in such a way that now the farmers will not even get this price. The farmers are now worried and are sitting and looking the side of the government today. Farmers say that the government should send officers to their field, get their survey done and proper compensation should be given to the farmers. The onion crop planted in the fields has been completely spoiled, except that the Pan Khandwa is suffering unseasonal rain. Due to rains, the trees are falling down in the entire district. The admins say that soon they will send their officers to the field and farmer will get compensation from the government. They should keep patience. Now listen the problem of a farmer of Khandwa district Jeetu Patel and a farmer organization leader Subhash Patel. What they are saying regarding this problem nowadays in Khandwa. Let's listen. ये 60,000 रुपये पर एकड़ इसका उत्पादन होता। लागत इतनी लगी है 60,000 रुपये पर एकड़। यदि उत्पादन अच्छा होता तो किसान को मोटी रकम मिल सकती थी। 60,000 मिल रहा है। अभी क्या भाव मिल रहा है? अभी तो 1-2 रुपये किलो भाव मिल रहा है। इसमें क्या पैदा होना, क्या लागत भी नहीं निकल पा रही। इस पानी के कारण अब प्याज कैसा रहेगा, क्या होगा? इस पानी के कारण अभी प्याज अभी लगी है, जो फसल पकने वाली है उसको पूरा फंगस आ जाएगा, खराब हो जाएगी, प्याज सड़ने लगेगी, बीमारियां बहुत सारी उसमें आ जाएगी। अच्छा, तो इस पे उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन नहीं के बराबर हो पाएगा। आपका परिचय दे दीजिए। क्या कहना है इस बेमौसम बारिश के कारण क्या नुकसान हुआ है और कैसे भरपाई हो पाएगी? नुकसान तो पिछले 1 महीने से हो रहा है। गेहूं की फसल, तरबूज की फसल। अब जो प्याज की उस समय छोटी फसल थी, लेकिन अब प्याज पक के पूरी तरह तैयार है, जिसका स्टोरेज होता है 8 से 10 महीने के लिए। लेकिन ये प्याज पानी गिरने के कारण, भाव नहीं मिलने के कारण किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। सरकार से मैं मुआवजे की मांग नहीं करता हूँ, सरकार से मैं मांग करता हूँ कि किसानों को उसके भाव जो है, लागत का मूल्य वो अगर मिलता है तो किसान इस प्रकार खेतों में पटक के नहीं रखेगा, वो उसको तत्काल बेच दे। लेकिन प्याज के भाव 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो होने के कारण किसानों ने संभाल के रखा था, लेकिन उस पर पानी गिरने से उसके पूरे अरमान ठंडे हो गए, उसके पूरे सपने धुल गए पानी के कारण। अच्छा, प्याज के अलावा और किन किन फसलों में? प्याज के अलावा तरबूज है, मूंग की फसलें हैं, प्याज का रोप है जो हम इसको अगस्त में प्याज लगाते हैं। ऐसे कई प्रकार की जो उद्यानिकी की फसलें हैं जिसमें सब्जी भाजी है, ये पूरी तरह नष्ट हुई है। इतना पानी जो बारिश में नहीं होता है वो अचानक 1 महीने से भी गिर रहा है, और 2 दिन में तो इतनी बारिश हुई है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। Thank you so much for watching Akaku. If you like this news, please subscribe, like, share.